नमस्कार वेलकम टू ओपीएससी ओएस ए टू जेड। सो आज आम डिस्कस करने जाऊँ 2023 विजन आईएएस टेस्ट सीरीज टेस्ट 2 रो क्वेश्चन नंबर 11 रू। सो लेट स्टार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। Option A, the chairman of this committee can only from the Lok Sabha. This is right. The members are elected every year for a term of 1 year. This is also correct. तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आ गोटे जिन ये मन रखु 1964 रे कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्रिएट होता तार काम कौन है इट एग्जामाइन्स द reports and accounts of the public undertakings, and it also examines the reports of the controller and auditor general on public undertaking. So it is correct answer option C. तो next है क्वेश्चन नंबर 12 को the vice president gives his resignation letter to क्या को दियंती एटा वेरी सिंपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दियंती अंडर आर्टिकल 67A. So next question number 13. Consider the following statement. There is no fixed tenure for the Supreme Court judge, as he can be removed from the office from his office by the president on the recommendation of the parliament. So it is ठीक. Then the conduct of the Supreme Court judges cannot be discussed in the legislature except during the impeachment motion. This is also correct. So both 1 and 2 are correct. So option C is the right answer here. How केतटा certain conditions अच्छी for being a Supreme Court judge. ताको minimum he can hold office until he attains the age of 65 years, and he can resign his office by writing to the president. So next question को जिबा question number 14 को consider the following statement regarding legislative council. The creation of legislative council of the states needs a constitutional amendment. एटा wrong हो गला because the creation of legislative council of the state doesn't need a constitutional amendment. So next jiba, it enjoys equal powers as the legislative assembly for ordinary bills. No, because in case of ordinary bill, legislative assembly overpower the power of council of state. तो आ गोटे कथा ये देखो जमी आम पार्लियामेंट रहा लोकसभा जगह लोकसभा जमी पार्लियामेंट रोचे से भली आमर स्टेट केस रे एटा सेंटर केस रे स्टेट केस रे आमर रोचे लेजिस्लेटिव असेंबली जमती राज्यसभा रोचे राज्यसभा भलिया काउंसिल ऑफ स्टेट रोचे इन केस ऑफ स्टेट. डू रिमेंबर दिस. सो एटी करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए डी इज द करेक्ट आंसर. नाइदर 1 ठीक अच्छी nor 2 ठीक अच्छी. द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एटा इनकरेक्ट हो गला बिकॉज द पार्लियामेंट कैन abolish a legislative council or create it if the legislative assembly of the concerned state passes a resolution to that effect. जदि concerned state गोटे resolution pass करछि then create हो पारिबो. Such a specific resolution must be passed by the state assembly by a special majority. This act of the parliament is not to be deemed as an amendment of the constitution under article 368 and is passed by an ordinary piece of legislation by simple majority. So a statement one wrong हो गला. एंड एटा जो देछि इट एंजॉयस इक्वल पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एटा हम कहली जमती लेजिस्लेटिव असेंबली ओवरराइड कर जाए क्या काउंसिल ऑफ स्टेट को. सो नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 15 को अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज और आर डिस्क्वालिफाइड इफ ही इज एन ऑन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. दिस इज करेक्ट. If he is of unsound mind and stands so declared by the court, this is correct. If he is disqualified under the provision of 10th schedule, this is also correct. Select the correct answer using the code given below. So 1, 2, 3 तीन जाक correct अच्छी. तो correct answer है option D is the correct answer here. So next question number 16 को जब with reference to the evolution of the Panchayat Raj in India, consider the following statement. Balwant Rai Mehta committee recommended establishment of two-tier Panchayat Raj system. This is incorrect because Balwant Rai Mehta committee recommended the establishment of 3-tier Panchayat Raj system, not 2-tier. So 80 incorrect
इनकरेक्ट हो गला सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू एस्टाब्लिश पंचायत राज यस राजस्थान नागपुर डिस्ट्रिक्ट रे फर्स्ट टाइम करके पंचायत राज सिस्टम इम्प्लीमेंट होता तापर क्या दिया आंध्र प्रदेश रे होता सो ये केबे 1959 रे डू रिमेंबर दिस सो नेक्स्ट जा ये ऑप्शन 2 टा ठीक हो गला नेक्स्ट जा 3 को द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन 1982 तो यहाँ इनकरेक्ट हो गला बिकज थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस केबे पाइतला एंड एटा केबे फोर्स को आसीथिला 24th एप्रिल गोटे सेकेंड 24th एप्रिल 1993 को जोटा को आम पंचायत राज दिवस हिसाब रे सेलिब्रेट करुचे सो ये ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट हो गला ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट हो गला तो राइट ऑप्शन है 2 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 विथ रेफरेंस टू इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स कंसिडर द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमेन्स टोटली साइलेंट ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द इंडियन टेरिटोरी एंड लीव्स इट टू द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन तो ये इनकरेक्ट हो गला बिकज आर्टिकल 301 रे जोटी की लिखा है The Indian Constitution declares the trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free. The freedom guaranteed by Article 301 is a freedom from all restriction except those which are provided for in this provision Article 302 and 305 of Part 13 of the Constitution itself. So statement 1 एटी correct हो जाउची स्टेटमेंट सॉरी ये स्टेटमेंट 1 ये इनकरेक्ट हो गला बिकज ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन साइलेंट किंतु कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंशन अच्छे थ्रू आर्टिकल 301 देन जी पार्लियामेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन स्टेट yes this is correct parliament can impose restriction on the freedom of the trade and commerce and intercourse between the states or within a state in public interest because the parliament cannot give preference to one state over another or discrimination between the state except in case of scarcity of goods in any part of the India. So option 2 it correct हो गला and option 1 is incorrect. So right answer देछि which of the statement given above is or are correct तो option 2 is only correct. So option B is the right answer here. So next question jiba question number 18 को the provision of 15th schedule and 5th schedule and 6th schedule of the Indian Constitution of India is related to the promotion of the interest of the linguistic minorities in every Indian state. No, the protection of the interest of the scheduled tribe. This is correct. So option B is the correct answer here. तो article फिफ्थ स्केड्यूल कौन कौच फिफ्थ स्केड्यूल कौच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब्स इन एनी स्टेट एक्सेप्ट द 4th स्टेट दैट इज आम जोटा को कहे AMMT आसाम मेघालय मिजोराम त्रिपुरा को छाड़देले बाकी जिते भी स्केड्यूल एरिया स्केड्यूल ट्राइब एरिया रहा स्केड्यूल ताकू किए एडमिनिस्ट्रेशन करू माने ताकू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सब एडमिनिस्ट्रेशन डील कर एक्सेप्ट AMMT तो यहाँ क्या अंडर आसी 5th स्केड्यूल अंडर एंड अंडर आर्टिकल 6 स्केड्यूल से प्रोविजन कौच कि फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन AMMT तो 6th स्केड्यूल कौच एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ AMMT एंड 5th स्केड्यूल कौच ऑल द ट्राइबल एरियाज एक्सेप्ट 1 second please yes all the tribal areas except AMMT. So it correct answer is option B is the correct answer here. आउ गोटे जिनस मन रखा जरूरी कि प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया एज द स्केड्यूल एरिया एंड ही कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज इट्स एरिया alter its boundary line and designation and make fresh orders for such redesignation
on the area of consultation in the governor of state concerned. So next question को जिबा question number 19 को on premature dissolution of panchayat after 2 years of its constitution. First option दीजिए it will be reconstituted to serve a full term of 5 years. This is incorrect. No fresh election shall take place for remainder of the term. This is incorrect. It will be reconstituted to serve the remainder of the period. So option C is the correct answer here. A panchayat constituted upon the dissolution of panchayat before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved panchayat would have continued had it not been in so dissolved. So option C is the correct answer here. So next is question number 22. In the context of 7th schedule, local government as a subject comes under which of the following? এটা quite obvious. तो এটা आंसर कौन हम स्टेट लिस्ट अंडर आसूची लोकल गवर्नमेंट. So option B is the correct answer here. So next is question number 21 को consider the following statement with regard to the state legislature. The legislative assembly while passing an ordinary bill can override the amendment made by the legislative council. सो एटा करेक्ट आंसर हो गला. टिके आगुरी आम ये विषय डिस्कस करते लेजिस्लेटिव असेंबली ओवर राइडिंग पावर अच्छी क्या काउंसिल ऑफ स्टेट उपर. देन ए बिल रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स origin ends and becomes dead. This is also right. So option C is the correct answer here. So next question को जब question number 22. Which of the following committee made recommendation with respect to center state relations? तो यार ऑप्शन कौन अच्छी सरकारिया कमिशन. दिस इज करेक्ट. जोटा कि अपॉइंटेड होता 1983 रे. It stressed cooperation federalism and noted that the federalism is more functional agreement for cooperative action than a static institutional concept. Then MM Punchi Commission के बेस थला 2007 रे. सरकारी कमिशन आसला 1983 रे. and राजमनर कमिटी आसला 1969 रे. तो क्रोनोलोजी मन रखा निहाती जरूरी. फास्ट आसला राजमनर कमिटी, देन सरकारिया कमिटी, देन एम पुंची कमिटी इन 2007. तो पुंची कमिटी रेकमेंडेशन सेटअप जो 2007 रे सेटअप होता रेकमेंडेशन मिलता 2010 रे. पुंची कमिटी हिसाब से देयर शुड बी ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस बिटवीन यूनियन and states via interstate council for legislation on the concurrent subject. Then Rajmanar committee कौन कहला. Rajmanar committee 1969 होता. Apart from making a call for immediate constitution of the interstate council, this committee made the recommendation like union government shouldn't take any decision without consulting the interstate council when such a decision can affect the interest of one or more state. Then आउ कौन कहला. इट्स राजमनर कमिटी कहला कि every bill which affects the interest of the state should be first referred to the interstate council before it is introduced in the parliament, and article 356 should be used only in rare cases of complete breakdown of law and order in the state. So तीनटा जाक काउंसिल तीनटा जाक कमिशन कमिटी रेकमेंड करथिला इंटरस्टेट रिलेशंस विषय. सो ऑप्शन 1 2 3 तीनटा जाक करेक्ट. क्रोनोलोजी हिसाब से मन रखिले फास्ट आसला राजमनर कमिटी, देन केम सरकारिया कमिशन, आफ्टर दैट MM पुंची कमिशन. सरकारिया कमिशन कहला रिगार्डिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. डू रिमेंबर दिस. MM पुंची कमिशन क्या रिगार्डिंग कहला कि there should be a consultation process between union and states via interstate council. Then Rajmanar committee यह कहला कि union government shouldn't take any decision without consulting the interstate council. So next question को जीवा question number 23 को. Recently seen in news Nord Stream 2 pipeline drawn between which one of the following pairs of countries? यार करेक्ट आंसर है रशिया टू जर्मनी. रिसेंटली जर्मनी हैज़ halted the Nord Stream 2 pipeline as nations have sanctioned Russia
So option B is the correct answer here. So next, which of the following is or are correct regarding the impeachment of the president? He can be impeached only on the charge of violation of the constitution. This is correct. One second, please. This is correct. Then, on removal of the president, vice president takes charge as president for the remaining tenure. This is incorrect. So, the right answer here, option A is the correct answer here. ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ଏ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡଜଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଏନି ଚାର୍ଜ ଫର୍ ରିମେନିଂ ଟେନ୍ୟୁର୍ ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଟିଲ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି इंडिया केस रे किंतु यूएस केस रे भाइस प्रेसिडेंट रेस्ट टेन्यूर निजर चार्जेस नियंती. सो नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 25 को विथ रेफरेंस टू चीफ मिनिस्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. देन yes, this is correct. He can be dismissed by governor at any time. This is incorrect. 3. He can recommend the dissolution of legislative assembly to the governor at any time. This is also correct. So 1 and 3 both are correct here. तो देखो ये आर्टिकल 163 of Indian Constitution कौन कहूँ says that there shall be a council of minister to aid and advise the governor in exercise the office function except for those function which requires the discretion of the governor. तो statement 1 ने जो देइए chief minister hold office during the pleasure of the governor, এটা correct because the term of chief minister is not fixed and the holds office during the pleasure of the governor. किंतु statement 2 जो देला कि he can dismissed by governor at any time, এটা wrong because this doesn't mean that the governor can dismiss him at any time. He cannot be dismissed by the governor as long as he enjoy the majority support of the legislative assembly. So option 2 टा ये incorrect है. He can removed by dissolution of the legislative assembly. It is correct. So option C is the right answer here. So thank you. ये हमर क्वेश्चन नंबर 25 जेन डिस्कस करिगले. नेक्स्ट क्वेश्चन आमे नेक्स्ट वीडियोज रे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन सब डिस्कस करबा.